Hey everyone, welcome to Students Point. This is 3rd of February and in this video today we are going to cover the Union Budget of 2021 and 2022. So the video might seem boring for those students who are not very serious, but for serious aspirants the video is going to be very important and crucial for the upcoming examinations. So be attentive everyone. And to get updates of all these videos, you can join us on Telegram by writing the channel's name Students Point. You can also follow us on Instagram by writing the username The Students Point. Let's begin now. But before that, if you find the video useful, then don't hesitate to like the video and share the video with as many friends of yours as you can. Also subscribe the channel and press the bell icon to receive the notification of all the videos. Now here is a question for the day which everyone has to answer in the comment section. The question is, which edition of India International Silk Fair has been launched virtually? These are the options. Read the options carefully and then answer it. Let's begin now. See, the first topic which we are going to study is Jal Jeevan Mission Urban. The Union Budget of this year has announced launch of Jal Jeevan Mission Urban. What is the aim of this mission? It aims at universal water supply in all 4,378 urban local bodies with 2.86 crore household tap connections as well as liquid waste management in 500 अमृत cities. तो अमृत सिटीज़ के बारे में आपने सुना होगा, अमृत स्कीम जिसमें वाटर टैप और सीवरेज सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने की बात की जाती है लगभग 500 शहरों में. तो उन 500 शहरों को आइडेंटिफाई किया गया है, साथ ही साथ 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज़ को कवर किया जाएगा अंडर दिस जल जीवन अर्बन मिशन. This Jal Jeevan Urban Mission will be implemented over the period of 5 years with an outlay of rupees 2,87,000 crore. Now our next topic is Swachh Bharat, Swasth Bharat. For further extending the Swasthta of urban India, the budget of this year has focused on complete facial sludge management and wastewater treatment. And Urban Swachh Bharat Mission 2.0 will be implemented with a total financial allocation of rupees 1,41,671 crore over a period of 5 years from 2021 to 2026. Important facts क्या है यहाँ पे? दो चीज़ें हैं. पहला तो ये 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये पीरियड इम्पॉर्टेंट है 2021 से 2026 तक. Now for clean air, to tackle the air pollution, the budget has proposed to provide an amount of rupees 2,217 crore for 42 urban centers with a million plus population in this budget. तो आपसे पूछ सकते हैं कि बजट में प्राइमरली कौन से सिटीज़ पे फोकस किया गया है, तो दैट सिटीज़ विच हैव पॉपुलेशन ऑफ मोर देन अ मिलियन. नाउ स्क्रैपिंग पॉलिसी. स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या होता है? देखिए, बहुत सारे व्हीकल्स जो ओल्ड हो जाते हैं उन्हें स्क्रैप किया जाता है, यानी कि उनके जो पार्ट्स होते हैं वियर एंड टियर होने के कारण उनको रिन्यू करके फिर से अदर यूजेस में लाया जाता है. तो इसकी पॉलिसी होना भी, स्क्रैपिंग पॉलिसी इज़ मस्ट फॉर एवरी कंट्री. सो अ वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस बजट टू फेज आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स. Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers and after 20 years in case of personal vehicles and 15 years in case of commercial vehicles. तो अगर कोई व्हीकल है जिसका यूज़ कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए हो रहा था या फिर कॉमर्शियल व्हीकल्स है, तो उसका टेस्ट होगा आफ्टर 15 ईयर्स. उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि वो व्हीकल्स फिट है या फिर नहीं आगे चलने के लिए. अगर वो अनफिट पाया गया, इन दैट केस इट विल बी स्क्रैप्ड. While if the vehicle is for personal use, then it will be tested whether it is fit or not after 20 years. Next topic now, agriculture and allied sectors. The budget focuses on agriculture and allied sectors. The finance minister has announced 9 measures for this sector as part of inclusive development for aspirational India, जिसमें सबसे बड़ा स्टेप है स्वामित्व स्कीम. स्वामित्व स्कीम को हमने कवर किया था फ्यू मंथ्स बैक. दिस स्कीम वाज अबाउट प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी इन प्रॉपर्टी ओनरशिप इन विलेजेस. तो स्टार्टिंग में ये कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में ही
extend किया गया था, but now it has been extended to all the states and union territories of India. Swamitva scheme. They may ask you about this scheme, that the purpose of this scheme is, so its purpose is to bring transparency in property ownership in villages. See, rural areas में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही इनफॉर्मल होता है प्रॉपर्टी का ऑनरशिप. आपने देखा होगा अपने आसपास के इलाकों में कि बहुत सारे लोगों को लोग क्लेम तो करते हैं कि ये ज़मीन मेरा है, ये लैंड मेरा है, ये लैंड मेरे ग्रैंडफादर का था या फादर का था, बट दे डोंट हैव एनी स्लिप और प्रूफ फॉर दैट. ऐसे में जब आपके पास कोई फॉर्मल क्लेम ना हो तो इट बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट टू प्रूव योर ऑनरशिप. तो उसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए स्वामित्व स्कीम हैज़ बिन लॉन्च्ड. नाउ इट ऑल्सो एम्स टू प्रोवाइड क्रेडिट टू आवर फार्मर्स. अब ये स्वामित्व का पार्ट नहीं है, ये नेक्स्ट स्टेप है अंडर दिस 9 मेजर्स. It aims to extend credit to farmers, and the limit of credit has been extended to rupees 16.5 lakh crore for this financial year. I repeat, 16.5 lakh crore. Also, Finance Minister announced the enhancement of allocation of Rural Infrastructure Development Fund, and now it has been increased to rupees 40,000 crore. Earlier it was 30,000 crore. साथ ही डबल माइक्रो इरिगेशन फंड, it has been started with a corpus of rupees 5,000 crore under NABARD by augmenting it by another rupees 5,000 crore. तो पूछ सकते हैं आपसे कि this micro irrigation fund will be managed under, so it will be managed under NABARD. Very important point here. Now it is proposed to increase the scope of Operation Green scheme that is प्रेजेंटली अवेलेबल फॉर टॉप्स. हमने डिस्कस किया था अर्लियर के वीडियोज़ में दैट ऑपरेशन ग्रीन एम्स टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस ऑफ टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो. बट नाउ दिस ऑपरेशन ग्रीन विल बी एक्सटेंडेड टू 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है फॉर द फार्मर्स. 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट्स. ऑल्सो फिनांस मिनिस्टर हैज़ प्रपोज्ड टू इंटीग्रेट 1,000 more mandis with ENAM to bring transparency and competitiveness. And the finance minister proposed to make available the agriculture infrastructure fund to APMCs as well for augmenting their infrastructure facilities. So those who were thinking that APMCs will now be discontinued, government ने यहाँ से एक मैसेज ये भी दिया है that they are not going to rather eliminate APMCs completely, rather they are going to even strengthen APMCs. Also, 5 major fishing harbors will be created, which include Kochi, Chennai, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Chennai in Tamil Nadu, Kochi of course in Kerala, then Paradip in Odisha and Petua Ghat. These will be developed as hubs of economic activity. Now the most important point among these steps are that one multi-purpose seaweed park will be established in the state of Tamil Nadu. Obviously they will ask you about this, that where the multi-purpose seaweed park is proposed to be set up under the union budget of this year. So it will be set up in the state of Tamil Nadu. If you are preparing for UPSC, PCS examinations or EPFO for the upcoming exam, and have not studied or completed the basic portions of your economy, then you can join this course. Under this course, entire syllabus for economy will be completed, and for subscribing the course, the link is provided below in the comment section as well as in the description box of the video. Economy plays a crucial role in selection because people often complete their polity from somewhere, history from somewhere, because this can be understood by your own after some hard work. But economy is a thing which if you don't get guidance, it is difficult to understand. So I emphasize that those who are preparing, go and enroll. Also, after subscribing to this course, you have to send your confirmation at pointstudent2020@gmail.com. But this is only for those who cannot afford the entire course for UPSC or PCS. Those who have already enrolled into this course, you need not to enroll into this. Obviously you have got all the chapters for economy till now. And
The fee for the entire course for UPSC or PCSE is just rupees 2499. You can also choose to pay it in 2 installments. And after subscribing to this course, you have to send your confirmation here at pointstudent2020@gmail.com. And again, the link has been provided below in the comment section at the top as well as in the description box of the video. Next topic now, disinvestment. See, this year's budget announced that the government has approved a policy of strategic disinvestment. Disinvestment में होता क्या है, यानी कि you are selling the assets of public sector undertakings. So here, government has announced that it will provide a clear roadmap for disinvestment in all non-strategic and strategic sectors. Existing central public sector enterprises, public sector banks, and public sector insurance companies will be covered under disinvestment policy. And disinvestment will be classified into two. The first one will be a strategic sector and the second one will be non-strategic sector. Under the strategic sector, bare minimum presence of the public sector enterprise and remaining to be privatized or merged with or subsidiarized with other CPSEs or will be closed. तो जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अभी काम कर रहे हैं और ख़ास करके वो जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट सीकिंग नहीं है फॉर द गवर्नमेंट, उन्हें या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या फिर उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा बड़े सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के साथ, या फिर उन्हें कम्प्लीटली बंद ही कर दिया जाएगा. साथ ही इस स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 4 सेक्टर्स आर टू कम. दीज आर एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, देन ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस, देन पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स. उसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फिनेंशियल सर्विसेज. In the non-strategic sector, central public sector enterprises will be privatized, otherwise it will be closed completely. Next topic now, science and technology. See, the finance minister has proposed an outlay of rupees 50,000 crore for the spread of 5 years for National Research Foundation. अब ऐसे फिगर्स जो राउंड फिगर में हैं वो ऐसे फिगर्स पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए ध्यान दें. फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रुपीज़ 50,000 करोड़ हैज़ बीन अलॉटेड फॉर 5 years and rupees 1,500 crore has been proposed for a scheme that will provide financial incentive to promote digital modes of payment and further boost digital transactions. साथ ही एक नया स्कीम या इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है विच इज़ कॉल्ड एज नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन. ये नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का पर्पस क्या होगा? To digitize the wealth of governance and policy related knowledge, and this knowledge will be made available in major Indian languages. साथ ही New Space India Limited, which is a public sector undertaking under Department of Space, ये एक्सरसाइज और एग्जीक्यूट करेगा PSLV CS-51 लॉन्च व्हीकल को, जो कि कैरी करने जा रहा है एमेजोनिया सैटेलाइट फ्रॉम ब्राज़ील और बहुत सारे स्मॉल सैटेलाइट्स फ्रॉम इंडिया एज वेल. तो ध्यान दें, NSIL is going to execute PSLV CS-51. Also, 4 Indian astronauts who are chosen for the Gaganyaan mission, which is the first manned mission of India, are under training in Russia. They may ask you about this country, that they are under training in which country, then it is in Russia. And for the better understanding of the oceans, Deep Ocean Mission has been proposed with a budget outlay of more than rupees 4,000 crores again for 5 years. So majority of the schemes or initiatives have been selected for 5 years. If you have found the video useful till now, then don't hesitate to like the video and share the video with your friends and loved ones. Also subscribe the channel and press the bell icon to receive the notification. Now for education sector. See, the budget proposes a qualitative strengthening of 15,000 schools to include all components of national education policy. Also, 100 new Sainik schools will be set up in partnership with NGOs, private schools और states. और ये भी propose किया गया है that Higher Education Commission will be set up as an umbrella body which will have 4 separate vehicles for standard settings, accreditation, regulation and funding. तो एक कमीशन सेटअप किया जाएगा और ये कमीशन
4 फंक्शंस देखेगी। ये चारों काम यहाँ पे मेंशन्ड है। द बजट ऑल्सो प्रपोज टू सेटअप अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लेह फॉर एक्सेसिबल हायर एजुकेशन इन लद्दाख। ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, बिकॉज लेह में ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं नहीं, वहाँ के लोगों को, बच्चों को बहुत वैली रीजन्स में दिल्ली और यूपी या फिर साउदर्न इंडिया के साइड मूव करना होता है। अगर वहाँ पे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल गई और क्वालिटी एजुकेशन वहाँ प्रोवाइड किया गया, देन इट विल बी यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स लिविंग देयर। नाउ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर। See, one scheme called as Ujjwala scheme, which has already benefited till now 8 crore households, will now be extended to cover 1 crore more beneficiaries. तो 8 करोड़ लोगों को ऑलरेडी फ़ायदा मिल चुका है अंडर उज्ज्वला स्कीम, लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके 1 करोड़ बेनिफिशरीज तक पहुंचाया जाएगा। उज्ज्वला स्कीम, यू मस्ट नो दैट इट एम्स टू प्रोवाइड द पाइप्ड गैस लाइन कनेक्शंस और कुकिंग गैस कनेक्शंस। साथ ही 100 more districts will be added to the city gas distribution network in the next 3 years, and a gas pipeline project will be taken up in the Union Territory of Jammu and Kashmir as well. साथ ही एक इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर सेटअप किया जाएगा टू फैसिलिटेट एंड कोऑर्डिनेट बुकिंग ऑफ कॉमन कैरियर कैपेसिटी इन और नेचुरल गैस pipelines. So if you have found the video useful till now, then like the video and share the video with your friends. Subscribe and press the bell icon. We will meet again in the next video. Until then, stay safe and thanks for watching.